This press briefing is conducted post our first meeting of the Arunachal Pradesh Allied and Healthcare Council, meeting that was held yesterday. So when we come to allied healthcare professionals, the healthcare professionals, when we broadly say, it includes the scientists, the therapists, or other professionals who studies, advises, researches, supervises, or provides preventive, curative, rehabilitative, therapeutic, or promotional health services, and who has obtained any qualification of degree under the Act, allied and health professionals. This includes associates, the technicians or the technologists who is trained to perform any technical, practical task to support diagnosis and treatment of illness, disease, injury or impairment, and to support the implementation of any healthcare treatment and referral plan recommended by a medical, nursing or any other healthcare professional, and who has obtained any qualification of diploma or degree under the National Commission for Allied and Healthcare Professionals Act 2021, the duration of which again is reiterated should be between 3 to 6 years, divided into various semesters. Now, to regulate or streamline these professionals, the Government of India enacted and passed the National Commission for Allied and Healthcare Professionals in 2021. It was passed through an Act of Parliament and gazetted, notified in the Gazette of India on March 28, 2021. And it was it came to effect on 25th May 2021. The broad scope of this act is to provide for the regulation and maintenance of standards of education and services, assessments of institutions that provides education in allied and healthcare professionals, maintain a central register or a state register for all the allied and healthcare professionals, and to create a system to improve the access, research and development and adaptation of latest scientific advancement and connected matters. National Commission for Allied and Healthcare Professionals covers 10 broad categories of professionals, which has 57 allied and healthcare professionals in this. So this commission covers 10 broad categories, which are: first is medical, laboratory and life sciences. Second category is trauma, burn care and surgical, as well as anesthesia related technology. Physiotherapy professionals, nutritional science professionals, occupational therapy professional, ophthalmic science professionals, community care, behavioral sciences and other professionals, medical radiology, imaging and therapeutic technology professionals, medical technologists and physician associates, and health information management and health informatic professionals. So these are the 10 broad categories of professionals which will be covered by the National Commission for Allied and Healthcare Professionals. Taking the Act into consideration, under the Arunachal Pradesh Allied and Healthcare Council was notified in September 2021, and council members were notified in January 2025. That means this year we have notified, the council consists of 20 members coming from various professionals, allied professionals, that we have categorized, and the council secretariat
is established currently under we have been issued office space generously by the authorities of Administrative Training Institute, Naharlagan. But we are functioning from the Directorate of Medical Education, Training and Research now. The Secretary of the Council was appointed on 1st November 2024 along with Registrar, and the Chairperson of the Council, Dr. Som Shankar Mukherjee, joined on 1st February 2025. Now, after the passing of this act and after the commission was established, the National Commission for Allied and Healthcare Professionals has issued direction to all states, union territories regarding the transitory period in granting permission to the institutes for opening new allied and healthcare courses. So the importance of today's briefing is that all the stakeholders, including the educational institutions, the parents and the students, they should know which are and what are the acts that are regulating the professionals they are interested in. If any students or if any parents wants to admit or wants to undergo any course in allied and healthcare professionals, first of all, they should know what are the allied and healthcare professionals. They should know which are the institutions that are recognized to give these courses and what are the standards. So they can browse through the councils or council doesn't have the website yet, but the commission has a website wherein all the acts and all the curriculums are issued. Now, as per the direction of the commission, they have allowed only the proposal for granting permission of admission in the next academic year for approved existing courses only. They have not allowed till the regulations are placed for any proposals in opening of a new allied and healthcare institutions with specified courses and intake capacity. They haven't allowed proposals for intake capacity of existing courses in allied and healthcare professional institutes, or they haven't allowed any proposal for additional courses from the existing allied and healthcare professionals. So, Arunachal didn't have any regulatory body regarding allied and healthcare professionals till now. So, with the establishment of Arunachal Pradesh Allied and Healthcare Council, we as a council will be overseeing the directions of the National Commission, and we will be implementing the directions that are being issued to the states. Now, the commission, they have issued curriculums for there. Of course, we have 10 broad categories and 57 professionals, but they have currently issued curriculum for anesthesia and operation theatre technology, applied psychology and behavioral health, dialysis therapy technology and dialysis therapy, health information management, medical radiology and imaging technology, nutrition and dietetics, optometry, physician associates, physiotherapy and radiotherapy technology. The commission has instructed that all the institutions imparting education in these professions may adapt these curriculums from academic session 2020-25 and 26. However, these curriculums are to be mandatorily implemented from the academic session 26-27 onwards. Now, after this Allied and Healthcare Professionals Commission was notified, they have also directed the discontinuation of the use of the term paramedic
medical. Previously, we used to call the other allied and healthcare professionals as medical professionals. But by its circulation dated 1st July 2025, the National Commission for Allied and Healthcare Professionals has conveyed that all the state governments, union territories and relevant universities, institutions are recommended to discontinue the use of term paramedical in all official correspondence, titles, in recruitment rules or notifications, educational materials or any other government related documents or portals. The term allied and healthcare professionals as defined and as stated earlier should be used for all forms of usage including verbal, written or electronic. So in Arunachal we have around 7 private universities and central university, but of this only 3 private institutions or private universities are extending allied and healthcare professionals education. We had our first council meeting yesterday, during which we deliberated on many important issues, of which some of the important issues were, formation of autonomous regulatory boards. Under this council, we need to have boards. So the boards for undergraduate and allied and healthcare educational boards, then postgraduate allied and healthcare education boards, allied and health professional assessment and rating board, then allied and healthcare professional ethics and registration board. We also had deliberation on having our own register or registration system in the council for all allied and health professionals in the states. We also had a deliberation on permissions for establishing new allied and healthcare institutions in the states. We also spoke about how to operationalize our council through seeking funds from the central as well as from the state government. So through this press briefing, I want to address all the stakeholders. Stakeholders are the government, the policy maker in the government, the educational institutions in the states, which can be the central or government institutions as well as the private institutions, and to the parents and to the students who are or who will be interested in considering their career in the allied and healthcare professionals. डॉक्टर पटेल ने हर चीज़ को डिटेलली हर चीज़ को बता दिया गया कि हम लोग का जो काउंसिल है ऑफ अरुणाचल प्रदेश अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के बारे में। फर्दर अगर आप लोगों को कोई कुछ अगर डाउट होता है या कोई कुछ आगे जानकारी चाहिए, राइट टू एवरीवन जो इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना कैरियर अलाइड हेल्थ केयर के देखना चाहते हैं, या जो पेरेंट्स जो अलाइड हेल्थ केयर के बारे में थोड़ा समझना चाहते हैं, इवन द स्कूल्स, कॉलेजेस या जो भी हायर टेक्निकल स्कूल्स हैं जो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज है क्या, इसके स्कोप्स क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, या ये किस किस एरियाज़ में हम लोग ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं, तो इसके बारे में आप ज़रूर आप निसंकोच ज़रूर आप अपना हमारे ऑफिस में आइए और ऑब्वियसली जो डिटेल्स आप हमसे ले पाएंगे पूर्ण रूप से आप विश्वास कर सकते हैं कि ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है और प्रोफेशनल कोर्सेज जो हम लोग चला रहे हैं और उनके कैरियर्स अभी नहीं बढ़ इन फ्यूचर में भी काफ़ी हद तक एज इक्वल एज जो अदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके हिसाब से हम लोग भी अपना रेपुटेशन बना सके। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। रेगुलेटरी बॉडी हमारा डॉक्टर्स का अलग है। तो जैसे कि डॉक्टर्स बोले तो फिर डॉक्टर्स में मॉडर्न मेडिसिन है जिसको हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन रेगुलेट करता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल है। इसके बाद हमारा जो आयुष डॉक्टर्स है, आयुष में फिर हमारा आयुर्वेदा है, तो और जितना सिद्धा है वो अरुणाचल प्रदेश इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन
जो काउंसिल है वो रेगुलेट करता है। इसके बाद होम्योपैथी को अरुणाचल प्रदेश होम्योपैथिक काउंसिल रेगुलेट करता है। और अगर डेंटल प्रोफेशनल का है तो अरुणाचल प्रदेश डेंटल काउंसिल रेगुलेट करता है। अगर नर्स है तो अरुणाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल रेगुलेट करता है। अगर फार्मासिस्ट है, फार्मेसी वालों के प्रोफेशनल के लिए अरुणाचल प्रदेश फार्मेसी काउंसिल है। तो ये अरुणाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल, अरुणाचल प्रदेश इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अरुणाचल प्रदेश होम्योपैथिक काउंसिल और अरुणाचल प्रदेश डेंटल काउंसिल और अरुणाचल प्रदेश फार्मेसी काउंसिल को छोड़ के जितना भी हमारा हेल्थ सेक्टर्स में अलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स को जो 10 ब्रॉड कैटेगरी में आता है या 57 प्रोफेशनल्स में आता है उसको रेगुलेट करेगा अरुणाचल प्रदेश अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल। तो ये सब काउंसिल का अपना अपना ये क्या है जिनको रेगुलेट करना है वो क्लियर है। अब जैसे कि हमें नेशनल कमीशन से हमें करिकुलम प्रोवाइड कर रहा है। अभी करिकुलम 10 प्रोफेशनल का करिकुलम इश्यू किया है। उनमें जैसे कि फिजियोथेरेपी का है या आपका डायलिसिस टेक्नोलॉजी का, आपने मैंने गिन के आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो लैब टेक्नोलॉजी है उसका अभी तक करिकुलम बना नहीं है, प्रोसेस में है, वो नोटिफाई हो जाएंगे। वंस वो नोटिफाई होने जाने से अरुणाचल में जैसे कि अभी फिजियोथेरेपी का है, बैचलर फिजियोथेरेपी कोई इंस्टीट्यूट दे रहा है या बैचलर मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी दे रहा है या बैचलर लेबोरेटरी साइंसेस दे रहा है जो कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर आता है। लेकिन उनमें से जैसे लैब साइंसेस का अभी तक हमारा करिकुलम मिला नहीं है कमीशन से, लेकिन फिजियोथेरेपी का मिला है। और उसको वो करिकुलम के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव तो हम जा नहीं सकते हैं, हम प्रोस्पेक्टिवली ये साल से जैसे करिकुलम में बोला गया कि ये साल से ये करिकुलम लागू होगा बोला, यानी कि करिकुलम में कितना आवर्स क्या क्या सब्जेक्ट में पढ़ाना है, किस टॉपिक्स को कवर करना है, वो सब है, किस स्टैंडर्ड्स में आपका टीचिंग फैकल्टीज कितना होना है, क्या फैसिलिटीज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होना है, इन करिकुलम में आप अगर पढ़ेंगे तो आप भी पूरा है इसमें। तो हम रिट्रोस्पेक्टिवली जैसे अभी नेशनल कमीशन ने ट्रांसिटरी पीरियड में हमें कहा गया कि ये एडमिशन नया इनटेक इंक्रीज नहीं करना है, नया कोर्सेज चालू नहीं करना है बोल के ऑलरेडी डायरेक्शन दिया हुआ है और उसको हमने डिसेमिनेट कर दिया है यूनिवर्सिटीज को थ्रू ईमेल। और अगर वो ईमेल नहीं मिला होने से तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं ये और रिटरेट करना चाहता हूं कि जितना भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है दे ऑल्सो जाने कि हमारा काउंसिल आ गया, काउंसिल का स्टैंडर्ड्स जो है उसको फॉलो करना है बोल के। इसलिए मतलब ये इंपॉर्टेंट, ये प्रेस ब्रीफिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि यूनिवर्सिटी को भी जाने, क्योंकि हम जितना भी, क्योंकि अभी हमारा फुल फ्लेज काउंसिल नहीं है, हम ऑपरेशनल नहीं है, हम 4 मैन ह्यूमन रिसोर्सेस है, तो वो जितना भी है हम कितना ना ज्यादातर ईमेल में कर सकते हैं। लेकिन ईमेल पहुंच रहा है कि नहीं, वन साइडेड अभी इंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमें रेसिप्रोकेट नहीं मिल रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि वो मिला है कि नहीं, एक्नॉलेज हुआ है कि नहीं। हम फॉलो अप तो कर रहे हैं, लेकिन आज का माध्यम से एक पब्लिक हमने ब्रीफिंग करके इंफॉर्मेशन दिया है बोल के एक जान जाएगा। तो जितना भी रेगुलेटरी मतलब जितना भी ये क्या जाए इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी जो सुन रहा है उन्हें भी ये वाकिफ होना चाहिए कि हाँ ये काउंसिल अभी आ गया, काउंसिल इज एक्टिव नाउ एंड काउंसिल विल फॉलो द स्टैंडर्ड्स दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो चाहे वो इन एजुकेशन में बोलो और सर्विस सेक्टर में भी हम स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो फेस वाइज होगा धीरे धीरे, क्योंकि एक साल अभी हम तो अभी जस्ट रेगुलर जो है इंफॉर्मेशन जो उधर से आ रहा है उसको हम स्टडी करके हम अरुणाचल में कितना लागू कर सकता है कि नहीं कर सकता वो स्टडी करके अकॉर्डिंगली हम धीरे धीरे करेंगे। पैरामेडिक्स कोई ऐसे प्रोफेशनल को अभी तक पैरामेडिक बोल के तो बोलते हैं, लेकिन पैरामेडिकल जो है वो किसी प्रोफेशनल को अभी तक डेजिग्नेट है नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि कोई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बोल के रखता है तो नाउ दे हैव टू ये पोस्ट दिस ये नोटिफिकेशन या सर्कुलर उनको चेंज करना पड़े, नोमेनक्लेचर अपना जितना भी है बायलॉस है जितना भी मेमोरेंडम एसोसिएशन है वो टर्मिनोलॉजी को पैरामेडिकल को हटा के अभी दे हैव टू यूज अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बोल के। तो जितना भी हमारा ऑफिसर्स है या आप लोग मीडिया वाला जब हमें ये हमारा अलाइड प्रोफेशनल्स को एड्रेस करेंगे आप कहेंगे नहीं कि पैरामेडिकल है बोल के, तो दे आर फ्रॉम अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो जितना भी ऑफिसर्स है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशंस होगा, इंस्टीट्यूशंस का नाम होगा या कोई भी अगर ये क्या अभी से पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स बोल के नहीं कहा जाना चाहिए।
रीजंस टू स्ट्रीमलाइन करने, जैसे कि मैंने आपको कहा है, ये अभी जब कमीशन आ गया, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अब ये तो नहीं किया नेशनल कमीशन फॉर पैरामेडिकल साइंसेज बोल के नहीं, जो स्पेसिफिक जो लॉजिक है वो तो है, जब अलाइड एंड हेल्थ केयर एनकम्पासेस मोर ब्रॉडर, ये क्या जो है आपका कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स है, जो आपको मैंने 10 गिन के बताया, उसके अंदर में 57 प्रोफेशनल्स है, तो वो सबको इनकम्पास करने, क्योंकि पैरामेडिक्स बोलने से, फिर पैरामेडिकल बोलने से आपका जो डाइटिशियंस है, डाइटेटिक्स वाले वो प्रोफेशनल्स वाले, या हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो वाले उसमें वाले, दे माइट नॉट बी फील इंक्लूडेड, तो उसको इंक्लूसिव कराने के लिए ये जो है अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बिकॉज द कमीशन इज कवरिंग ब्रॉडर प्रोफेशनल कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स, तो उनको इंक्लूड करने के लिए ये जो है इस टर्मिनोलॉजी को ये क्या है